My name is Gautam Kumar and I am 48 years of age, and cycling has become a passion for me because cycling takes me closer to the nature. Thailand has always felt like home for me, and I know the place, I know the people, I love their food, so it's the most convenient place for me to go on a bike trip. थाईलैंड बहुत डिस्कशन के बाद मालूम चला कि एक साइकिलिंग फ्रेंडली कंट्री है, तो एक दोस्तों के बीच एक यूनानिमस डिसीजन बना कि हम लोग थाईलैंड चलते हैं साइकिलिंग के। So day one, Tourism Authority of Thailand welcomed us. The director of Hua Hin Tourism Authority even flagged off the entire event. So it was a very beautiful experience. Waking up early, riding was all about, starting in the dark. For the first 1.5 hours, we were almost in the dark and there was hardly any traffic with us. Those 1.5 hours were absolutely serene. So we were full of energy, and everybody knew that we had 800 kilometers to move in next 8 days. Day one for us in this trip, we were riding from Hua Hin to Parachup Khirikan. It was technically a distance of around 90 kilometers, but we ended up riding around 135 kilometers. It was difficult for me to ride, but yes, because all my friends were together and we enjoy our company together. डिफिकल्ट मेरे लिए ये था कि मेरा प्रैक्टिस उतना था नहीं, मैंने कभी 100 किलोमीटर चलाया नहीं, और थाईलैंड तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, पर ये मेरे को रोड का भी आइडिया नहीं था कि मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। मेरे मन में तो कई सवाल थे, लेकिन फिर भी जज्बा था कि मुझे करना है। 1 से 2 बजे का समय था, हम लोग उस समय डिसाइड किया वी टेक अ ब्रेक, बिकॉज इतना हॉट था, इतनी गर्मी से कोई एंड नहीं। पहले दिन जब मैं आई हैड अ फॉल, जो मुझे चोट लगा, पहले 2 घंटे, उसके बाद वो 2 घंटा मेरे लिए बहुत पेनफुल था और ये दर्द भी बहुत कर रहा था, पकड़ लिया था। फिर धीरे धीरे मैंने स्ट्रेचिंग करते और जब जैसे इसको साइकिलिंग करता चला गया, ये हीट होता चला गया और ये खुलता चला गया, उसके बाद मैं रुका नहीं। उसके बाद मुझे अभी तक मजा आया। We started at 4 in the morning and we ended the ride at 6 in the evening. So it was a good 14 hours ride, 135 odd kilometers, and we were tired, exhausted, but fulfilling experience. The next day it was all set and we are cruising again. We are on day 2, we have 90 kilometers to ride. Are we ready? Yeah! Go! कनिष्क व्यास, उन्होंने जो 4 बजे आके उठाना, उठो, कम ऑन, लेट्स मूव, और उस 5 मिनट में आप लोग कितना फास्ट काम करते थे। बिग थैंक्स, कर्नाटक प्लेइंग। Team was prepared for what to expect. So on day 2 we were supposed to ride from Parachup Khirikan to Bang Sapan. थाईलैंड पहले जब आते थे तो हम लोग जो है टूर के लिए आते थे कि इंटरनेशनल टूर है, घूमना है, तो बैंकॉक चले गए, पटाया चले गए, करावी चले गए, बट कभी भी जो है इनर पार्ट को नहीं देखते थे। इनर पार्ट को जो है देखने का वो मजा आता है जब हम कोई तरह का एक्सपेडिशन करते हैं या कोई रैली करते हैं और वहाँ के जो लोकल कल्चर्स होते हैं वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। Almost 70 to 80% the lanes were dedicated for cycling, and wherever you go the cyclists were given preferences, so that is what makes Thailand a bit different. If you talk about the village, the roads of Thailand, it's beautiful with sea beaches, raw sea beaches where nobody goes there.
हर एक दिन जहाँ हम लोग रुके हैं वो एक नया ही टेरेन, नया ही बैकग्राउंड पूरे स्टोरी को दिया है। कहीं पे बोट्स दिखते हैं, कहीं पे बीचेस दिखते हैं। अच्छा स्ट्रेच है, mesmerizing सीन और fascinating Thailand. I love this. But one thing which is very constant is lovely people of Thailand. Everyone who you meets with a grace and smile, which I really like. We would stop at random places. There was one place where we stopped at where aunt came, like an old lady came and she gave us food over there. Again, going by the rituals, we started early in the morning. We were cycling from Bang Sapan to Chumpon, again a 100 kilometers ride. केपी बाबा जो हम लोग के हैं 4 बजे उठाते थे हम लोग। 4:30 या 4:45 मैक्सिमम टाइम था। अगर 4:30 में हम लोग पहुँच गए तो किस्मत बढ़िया, 4:45 में हम लोग पहुँचे तो आपको पीछे से अकेले आना है। After a very, very long time, I had my speaker with me and the choice of my old songs. This was something that I really loved. Then we stopped in a temple which had a huge sleeping Buddha statue over there. It was a beautiful experience going and staying in that temple. जो कबाना बीच रिसोर्ट पे जब हम पहुँचे और वो समुद्र का किनारा और जो रिलैक्स जो फील किया, जो 100 किलोमीटर हम चला के आए और वो जगह के वाइब से वो थकान हमारी दूर हो गई 2 मिनट में। Among different cities, I think my favorite place is Chubong. That place was pure, like it was heaven. The whole view of the ocean with coconut trees was very captivating. It was a beautiful experience. We enjoyed our dinners over there later and we slept early. The next day was again like more than 100 kilometers. So we decided to break it into 2 halves. From Chumpon to Pak Nam Taco. And from Pak Nam Taco we did another ride to Bantrang the next day, which was approximately around 60 kilometers. साइकिल से पूरा डायमेंशन चेंज हो गया। जब रास्ते पे चलते हैं, आराम से चल रहे हो, 360 डिग्री एंगल पे जब इन्वायरमेंट देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पंछी देखते हैं, तो एक अलग ही डायमेंशन लाइफ का जो है ना डायमेंशन, और लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं उससे। पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है साइकिलिंग करते वक्त। जिस तरह से लोगों ने हमारा वेलकम किया, लोग हमारा स्वागत किए। अगर हम कहीं पे खाने बैठ रहे थे तो वो खुद हमें कुछ चीज़ें ला के देते थे। पानी की ज़रूरत तो पानी हमें देते थे। लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी वो हमें हमेशा सपोर्ट करने के आगे रहते थे। So these people in this particular local restaurant welcomed us with open heart. They allowed us to cook food in their kitchen. So we were finally able to cook some food the way we like it. जब हम अभी एक्सपेडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल लोगों से जब बात करते हैं तो उन लोग बहुत ज़्यादा जो है मिलनसार होते हैं और बहुत जल्दी जो है कोऑपरेट करते हैं। The hospitality what we got is amazing. So that's why this country is more welcoming and people enjoy coming back to Thailand. Day 6 started early in the morning. It was kind of getting cold because we were in the hills over there. सुबह सुबह जब हम लोगों ने शुरू किया तो जंगल के बीच में रुक गए क्योंकि 2 फेलो राइडर पीछे रह गए थे जिनके पास लाइट नहीं थी और एकदम नहीं पता था कि एलिवेशन क्या है। और आगे जब बढ़े पूरा फॉग था। बहुत समय ऐसा होता था कि मैं बहुत कई किलोमीटर तक पीछे रह जाता, दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, रास्ता मुझे पता नहीं होता था। लेकिन मेरे टीम की एक अच्छी खास बात ये थी ना, हर टर्निंग पे लोग वहाँ पे खड़े नजर आ जाते थे जिससे मेरा हौसला डबल हो जाता था। The Thailand that generally people would not experience at sea. It was something that we were doing for the whole of 8 days during our expedition. जिस तरह से साइकिल पे हमने वहाँ उस कंट्री को देखा, उस थाईलैंड को देखा, वो अमेजिंग था।
This was as local as Thailand can be and as pure as nature. It was a very fulfilling experience. It was a very, I can still feel that moment right now while I'm talking. Thank you, Tourism Authority of Thailand, for helping us and supporting us for this event. Anybody who supports you for something like this means a lot. This trip wouldn't have happened without Ped. He knew Thailand like back of his mind. He would be there whenever we would need him for any kind of support. So Ped, big thanks to you. And then we had Maria, a Russian photographer. She was documenting the entire journey for us through photos and videos. And it was fun having her around. जैसे ये टूर ख़त्म हुआ, हम कुछ नए प्लान के लिए बातें चल रही हैं हमारी, और हम फिर एक नए ट्रिप की ओर जाएंगे. After accomplishment of the entire thing, whatever you have thought, the plans that you have made, you have accomplished it. So the sense of accomplishment, the sense of doing something correctly, that makes you happy. All of us were singing in whatever ways we could. We hugged each other, we danced, we jumped. I can never forget the experience of finishing that expedition on such a high note. Love you, Thailand.